Good morning. Very good Good morning, morning. Bitti ji. How was your Good anniversary? Thank you. Very Yeah. nice. Very nice. Good morning, beta. Good morning, Deepti. Good Very morning. good morning. Very good morning. Good morning, everyone. And Good thank you for morning. waking up on a Saturday morning when everyone else must be sleeping right now. The Thank you pleasure. so Great much. for this And session. instruction was no noise. Yeah, no noise, and the better it is. Yeah. That's why we wake up in the morning, isn't it? Like really like a miracle morning, literally. So I've actually Yes. started calling it Miracle Morning after Hal Red's book, like it is a miracle morning because all the miracle things happen. And as it is, we've always learned that the power of the morning affirmation and blessings is 10,000 times more than rest of the day. So this is the beauty. Anything that we want to achieve faster, that we want to achieve quickly, उसको ब्रह्म मुहूर्त में या अमृत वेला में एम्ब्रोजिया आवर्स में करने में 10,000 गुना उसकी पावर ज्यादा होती है. जैसे कहते हैं ना, हार्ट की पावर ब्रेन से 5,000 टाइम्स मोर होती है, वैसे ही अमृत वेला में यानी कि सुबह उठ के अगर आप कोई भी ब्लेसिंग्स लिखते हैं या कोई भी आपका बहुत स्ट्रांग विश है, डिजायर है, कोई ड्रीम है, उसको सुबह करने से अमृत वेला में या ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको. सो उस टाइम करने से उसकी क्रिएटिव पावर्स 10,000 गुना ज्यादा होती है. So all those people who do it in the morning, they see a huge difference in their life and much faster, because that is a time when there is zero traffic jam between us and the powers of the universe. So this is the power. So अगर कोई भी ऐसा चैलेंज है जो मतलब कोई बोल्डर है जिंदगी का जो बहुत ज्यादा मूव नहीं हो रहा है आराम से, या जिसको टाइम लग रहा है, अगर आप उसको स्पीड पकड़नी है तो रात में टाइम से सोना शुरू कर दो, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन द इवनिंग्स, नॉट द मॉर्निंग्स. एक्चुअली पीपल आर स्लीपिंग लेट. दिस इज द रीजन. मॉर्निंग में अगर आप सिर भारी करके उठोगे कि नींद पूरी नहीं हुई है, ये फिर उसका मजा नहीं आता. यू हैव टू फील लाइक अलाइव, फ्रेश, rejuvenated, absolutely, like all senses awake. So that has to be the kind of the maza of the miracle morning. So इसीलिए work on the evening timings. 9 o'clock, everything shut down, be in your bed, read your book or whatever it is that you want to do. Print हाथ में आते ही, जो print वाली जो किताबें होती है वो हाथ में आते ही वैसी बहुत अच्छी नींद आती है. And once you get the habit of sleeping early, you will not be able to wake up till late. So enjoy your mornings more than you enjoy your evenings, because that is what is transforming life, and that too at a fast speed. Do this and see. There was a time when I wanted to kind of shift something, so I started doing it like waking up. Anyhow, I anyhow sleep by 9 o'clock, so that is my cutoff time. No socializing Monday to Friday or something. Even if it is parties, I'm back by 9:30. I don't like to overstay unnecessarily, and like I don't derive a joy out of it. So because I love my mornings. I mean, this is the time when I'm doing so much, and then after that going to the gym, that is also divine, like even gymming is divine. So throughout abhi 4:30 बजे से लगातार जो ऐसा टाइम चलता है, that is shifting life to such a large extent. That is what helps me to tap into things. That's what gives me intuitions, ideas, hunches. That's what makes me speak things I don't know of. Also, sometimes when I talk to you, I don't know. It is just flowing through me, like then I realize that, oh, I have not read that book, and that book actually has this written on page number 60. मुझे नहीं, मैंने वो बुक किताब पढ़ी भी नहीं होती है, बट मुझे पता होता है कि ऐसी चीज पेज नंबर 60 पे लिखी है. So this is the power. The universe gives us that kind of a force, and like we become in alignment with the power of the universe. So this is how beautiful life is, isn't it? एंड इतनी बार आइडियाज आते हैं ऑफिस में कि ये वाला काम कर लो, उसकी वजह से ये हो जाएगा, एंड देन आई एक्चुअली डू दैट. सो ऑल दैट इज यूनिवर्स टॉकिंग टू अस. ओके, सो आवर कनेक्शन विद द फोर्सेस इस ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ हमारा अलाइनमेंट बहुत पावरफुल हो जाता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं सुबह, और ब्रह्म मुहूर्त में आप अपनी जर्नलिंग करते हैं. जो भी आपको लिखना है, आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, आपको हैव अ मैजिकल डे करना है, एफर्मेशंस करने हैं, मेडिटेशन करना है, चाहे आप 5 मिनट करें, होपोनोपोनो करना है. होपोनोपोनो बाय द वे इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं. तो
तो ये आप पैसे के लिए कर सकते हो या आप रिश्ते के लिए, इन एडिशन टू व्हाट ऑल प्रैक्टिसेस यू आर डूइंग यू कैन डू. सो दैट टाइम इन द मॉर्निंग इज समथिंग एंड इट डज नॉट टेक टाइम. अगर आप 5 बजे भी सो के उठते हो फ्रेश, ठीक है, अगर ग्रॉगी ग्रॉगी उठोगे तो मजा नहीं आता है करने में क्योंकि सिर में भारी होता है, ठीक है, लेकिन फ्रेश अगर आप उठते हो तो फिर आप देखना दैट ये, सो दैट लिटिल शिफ्ट इन द डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड टू अलाइन टू शेप आर डे. आई थिंक एक जिंदगी के लिए जो हमको ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में मिली हुई है, जिसको हम शिरोमणि बोलते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू बी बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग. Okay, and the best, you know, like how I can say the gift that we have as a human being is that ability to choose, ability to decide. Okay, so have that ability to choose that how do I need to shape up my day, how do I wind up the day, how can I eat early, because इन सब चीजों से क्या होगा, हेल्थ वैसे भी अच्छी रहने लग जाएगी, है ना. जैसे अगर आप ऑब्वियसली कोई 9 बजे सो रहा है तो वो 6:30-7 बजे तक तो अपना डिनर कर ही लेगा. उसकी वजह से बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज जो शायद हमको हो रहे थे वो भी नहीं होंगे, बिकॉज ईटिंग फूड एट द सनसेट टाइम इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर बॉडी, बिकॉज उसके इतने सारे मेडिकल फायदे होते हैं. बिकॉज ये मेडिकल क्लास नहीं है सो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन एज अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर अगर आप, मतलब आई कैन जस्ट टेल यू दैट अगर आप सोने के 3 घंटा पहले खाना खाते हो आपको कभी कोई मेडिकल इश्यूज नहीं होंगे. यू नो, नॉट जस्ट मेडिकल बट लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज बहुत धीरे धीरे आप देखोगे डिसिपेट होने लग जाएंगे, है ना. तो आप जल्दी खाना खा के बाय 9 o'clock अगर आप बेड में आ जाओ तो, और फिर सुबह जल्दी उठ रहे हो, देन यू सी हाउ दैट क्ले जो हमको लाइफ का दिया हुआ है इस यूनिवर्स ने, गॉड ने, है ना, क्ले दिया हुआ है, उस क्ले को हम शेप बना रहे हैं और अपनी जिंदगी को एक शेप देते जा रहे हैं. कभी खुशी का शेप, कभी कैसा शेप, जो हम अपनी, बिकॉज वी आर क्रिएटर्स, so we have to learn to take full control and charge of creating our life the way we want to. Okay, that creative mode will be more active and enhanced when we follow a good lifestyle, not just for the health reason but also to be able to create. Creation के लिए पावर तो चाहिए ना, पावर आएगी कहाँ से? ये पावर आती ही उससे है दैट आप सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में, टाइम से खाना खा लो, बहुत अच्छे से पूरे दिन पानी पियो 3 से 4 लीटर. नॉर्थ इंडियंस जितने भी हैं यहाँ पे, सर्दियों का टाइम है यहाँ पे, तो अपने आप पानी की क्वांटिटी, हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है ऐसे में, कभी कभी 4 ग्लास भी नहीं पीते, ठीक है. आपकी बॉडी में कम से कम 2 से 2.5 लीटर यूरिन निकालने की जरूरत होती है एक दिन में. उस हिसाब से आपको 3.5-4 लीटर पानी पीना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं होता. योर बॉडी वर्क्स ऑन, यू नो, योर मेटाबॉलिज्म वर्क्स ऑन योर वाटर इनटेक. सो पानी को थोड़ा सा गर्म कर करके आप पीते रहो अगर आपको नहीं पीना है, और जल्दी सो जल्दी उठो, ठीक है. एकदम से तो नहीं होगा, अगर 12, 12:30, 1 बजे सोते हैं, सो यू नो लाइक एकदम से तो नहीं होगा कि 9 बजे सोने लग जाओ, पर धीरे धीरे अपना टाइम कंडेंस करो. इफ यू स्लीपिंग एट 12:30, आप 11 बजे अपना कट ऑफ टाइम, अलार्म लगा दो, 11 बजे सारा काम बंद, जो है कोई बात नहीं, नहीं हुआ कल कर लेना, ठीक है, एंड देन गो टू स्लीप. So this is how it is, and well, children in the family are also watching us. You know, a house in which the adults sleep late, children also sleep late. They are trapped into that kind of a lifestyle. धीरे धीरे आप देखोगे कि उनकी जिंदगी में भी डिसिप्लिन आने लग जाता है ना. सो इसीलिए पेरेंट्स नीड टू काइंड ऑफ कट डाउन ऑन देयर स्क्रीन टाइम और वॉचिंग टेलीविजन एंड ऑल दोज नेटफ्लिक्स मूवीज आफ्टर 9 o'clock. यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है. there's always a way out, figure out. अगर नहीं हो रहा है लाइफस्टाइल ये ठीक इस तरह से, तो लिखना शुरू कर दो that thank you universe that I have an amazing lifestyle and every day I'm able to sleep very easily and joyfully, you know, by 9:30 or whatever time it is. Okay, so this is how it is how. So I'm doing a course that happens between 9 to 9:30, but now because वो मेरे लिए तो 9:30 खैर बहुत लेट हो जाता है, because 9:30 कोर्स खत्म होता है वो 9:38 9:40 हो जाते हैं. फिर उसके बाद then you know like I go and change because you have to look presentable. You know, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कैमरा बंद करने का, तो कैमरा खुला ही रखना होता है. So you can't even be in your night suit and be attending that course. So उसके बाद चेंज करो, ये करो, and then sleeping. So it becomes time. तो अब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग्स देखनी शुरू कर दी है. मुझसे नहीं होता, मेरे बस की नहीं है 9 to 9:30 कोई भी you know वो करना. So but then I don't miss it. I ask for the recordings and I get them every day. मतलब लिंक ही मिल गया है जिससे रोज की रिकॉर्डिंग मिलती है. So this is why. So इस तरह से मैंने भी तो अपना चेंज किया ना स्केड्यूल,
बिकॉज टाइम से तो ये सब हमको करना पड़ेगा. यू नीड दैट लाइफस्टाइल मसल टू बी एबल टू ट्रांसफॉर्म लाइफ. और इतनी सुंदर लाइफ दी हुई है, वो भी एक क्ले के साथ जिसको आप मोल्ड कर सकते हो, मतलब लाइफ को जिसको आप क्रिएट कर सकते हो. Why to get swayed? Why not to take charge and control? Because human beings they have an ability to choose. So better choose right, choose the correct lifestyle. Once in a while it's okay on the weekend that you're sleeping at 10:30, but otherwise in rest of the time, rest of the days, try to be mindful of what you're doing, what time you're going to bed, what time you're waking up. And if you wake up at 5, और अगर आप पहला 1 घंटा अपनी जर्नलिंग को देते हो, अपने 5-10 मिनट्स होपोनोपोनो कर लो, या मेडिटेशन. होपोनोपोनो भी एक मेडिटेशन ही होता है. और अगर आप अपने एफर्मेशंस लिख लो जो आपको चाहिए, और खूब सारा थैंक यू या ग्रैटिट्यूड फील करके, एंड देन यू वॉच योर लाइफ. इट विल नॉट टेक यू इवन 6 days to have your prayers answered. People have it answered in one day. That is how powerful manifestors we become when we become mindful of the kind of lifestyle that we have. Okay, when you revere your life, life reveres you. Matlab, when you have the highest form of respect for your body and for your life, then life, the sources, that are there, that source energy, that powerful energy, that also respects us and that wants to give us more. We ask for one thing, we will get X plus 5. This is how beautiful the life is. So continue doing these practices. Try and work on your lifestyle. ठीक है? अब अगर अभी आप सिर्फ 20 वो लिख पा रहे हो, blessings या goals या have a magical day, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा करने की को, बिकॉज लगातार एक्सपैंड एंड ग्रो करना, ये तासीर होती है ऑफ बीइंग born as a human being. If you are not doing that, if you are deteriorating, then we need to just pull up our socks and tighten our belts now. Okay, so we need to do a little more than what we can. That's what is going to give us the best. Because again, I'm repeating, the power of the morning affirmations and blessings, or whatever it is that you do, have a magical day practice, health practice, is 10,000 times more than rest of the day. Okay, so that is the power of waking up at Amrit Vela, मतलब सुबह sunrise के पहले. ठीक है? So now we go to a very, very beautiful chapter for all those जिनके साथ ये हो रहा है कि बॉडी का वेट नहीं कम हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिनकी स्किन पे थोड़ा सा कुछ ऐसा है, पिगमेंटेशन या कोई ऐसा, और उनको स्किन पे बहुत ग्लो चाहिए, यंग, टाइट, क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग स्किन चाहिए. किसी के भी अगर ब्रीदिंग में कोई इशू चल रहा है, डाइजेशन में कोई इशू चल रहा है, इम्यूनिटी अगर कम हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपको लग रहा है कि आपको किडनीज को 100% फंक्शनल करना है, या लिवर में कुछ इशू है, या जो भी हेल्थ पैरामीटर्स में कहीं पे भी ब्रेकडाउन है, या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात को नींद नहीं आती है ठीक से, तो जब भी वो सारे फिजिकलिटी वाले इश्यूज हो रहे हैं, उनके लिए आज का चैप्टर है. ठीक है? तो आज का है हेल्थ, द मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन हेल्थ. आज के चैप्टर का नाम है जादू और चमत्कार सेहत की दुनिया में. So that's what we will be studying today, and that one aspect of our health that we most want to achieve. Okay, that is what we will be working on today. आज एक ही चीज में जब वो हो जाएगा तो एक और दूसरा हेल्थ का एस्पेक्ट. सो एनीथिंग हमारे अगर हेल्थ में हमको कुछ बहुत सुंदर करना है, ठीक है, उसके लिए आज का चैप्टर है. सो यस, द ब्यूटिफुल रीडिंग ऑफ अनुराधा शाह for us today. Magics and miracles in health. We'll just go through the image. Are you able to see the screen, Anu? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there is something written, magic elixir. मैजिक का मतलब जादू, एलिक्सिर का मतलब होता है अमृत, वो मैजिकल पोशन जिसको लेके लोग अमर हो जाते हैं. अमृत है ना, उसको एलिक्सिर बोला जाता है. मैजिक एलिक्सिर है, और खूब सारी अलग अलग तरह की काली सफेद बॉटल्स बनी हुई है यहाँ पे, जो भी मतलब वो है, और उसमें खूब सारा ग्रैटिट्यूड है. मतलब ये मैजिक एलिक्सिर है हमारा ग्रैटिट्यूड. ये वो जादुई तत्व है जिसकी वजह से हम अमर, एज इन लाइक हमारी वो सिचुएशन जो भी हेल्थ पैरामीटर्स है वो एक्सीलेंट हो जाएगा, एंड यू विल एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ. हाँ जी, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Day 16, Magic and Miracles in Health.
I quote, One miracles, second, 1 second. Please go along with the book. okay, I quote, Hanji. miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Unquote, Saint Augustine, theologian and Catholic bishop. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have a birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all state of less than full health. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website www.thesecret.tv/stories. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts your very health at risk. I quote, whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Again, I quote, whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But
even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, magic and miracles in health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the results. Step number 1, health you have received, that is in past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Step number 2, health you are continuing to receive, that is present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you for each one. Step number 3, health you want to receive, that is in future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything you have put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can make only the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together. So we magnetize it to us in one fell swoop. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision.
If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. I quote, natural forces within us are the true healers of disease. Unquote, Hippocrates, father of Western medicine. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. Magic practice number 16, magic and miracles in health. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Number 3, think about 5 functions of your body that are well and one by one give thanks for each one. Number 4, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand, say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Anu, for your beautiful, ma'am. beautiful आराम से read करने के लिए. Thank you so much. And very indeed chapter, because every word of it was important, because health is something that really pulls down. और उस वक्त high frequency में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि कहीं पे अगर पेन हो रहा है या कुछ ऐसी चीज हो रही है, वीकनेस बहुत आ रही है या कांस्टेंट कॉफ हो रहा है, it is so difficult to forget about it because you're constantly undergoing and you're living it, right? So ऐसे में, this practice comes so handy because it's a powerful practice. And if you've noticed, it is like past के लिए 3, current के लिए 5 and future के लिए 1 लिखना, which means 3 plus 5 plus 1 is equal to 9, which is 3 times the power of 3. So this is that powerful a practice. 9 की power, of course 3 is the number of creation. Numbers have got a huge significance, है ना, उनमें cosmic powers होती हैं. So ये वाला जो नंबर होता है 9, इसमें बहुत पावरफुल 9 प्लैनेट्स होते हैं, दुर्गा माँ के 9 रूप होते हैं. तो इस तरह मतलब जो सुर होते हैं वो भी 9 सुर होते हैं, है ना. रत्न जो होते हैं जेम्स, दे आर 9, लाइक नवरत्न बोलते हैं उसको. तो जो भी ऐसी डिवाइन डिविनिटी के साथ जो चीजें होती हैं वो सब 9 होती हैं. So 9 में ऐसी पावर है और 3 is the number of creation. So it is 3 times multiple of 3. So 3 times the power of 3 is the number of creation. So 9 becomes a very powerful number, जो आज हम practice में कर रहे हैं. But it is not past, present, future. It's not 3. It is not 5, 3, 1. It's not like in a descending order.
It is 3 for the past, 5 for the present, because we are living with those 5 elements of the body right now, present में. So इसीलिए 5 it is for the present and 1 that we are creating in the future. अब वो 1 जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अपना आइडियल बॉडी वेट चाहिए, आपको टोन्ड एब्डोमिनल मसल्स चाहिए, विजन इंप्रूव करना है, जो आपके कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज है वो करना है ठीक, मे बी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर वो ठीक करना है हमको, या अगर कुछ बार बार कुछ इश्यूज आ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसा वो ठीक करना है. So whatever it is, if there is some osteoporosis or anything, migraines, जो भी चीज, एक चीज को हमको that we most want to transform, ठीक है, वो क्योंकि हमने शायद उस चीज में बहुत एनर्जी पास्ट में दी हुई है, अभी भी वो माइनस पे स्टैंड कर रही है इन स्पाइट ऑफ डूइंग ग्रैटिट्यूड इतने टाइम से. मतलब इतना ज्यादा कंप्लेन या उसके बारे में डिस्कस किया है हमने, या उसके बारे में हम बहुत नेगेटिव फीलिंग जोन में रहे हैं, इसलिए आज वो टाइम ले रही है ठीक करने के लिए. बट ये जो प्रैक्टिस है ये एक्सेलरेट कर देती है हीलिंग हमारी बॉडी के अंदर को. सो हीलर्स, सारे जो एजेंट्स होते हैं वो सारी बॉडी के अंदर ही है, उनको हमको एक्टिव करना होता है बस, है ना. उन्होंने अभी तक नहीं, क्योंकि फीलिंग फ्रीक्वेंसी हमारी थी कि ये नहीं हो रहा है या इस तरह से मुझे इशू है. पीपल आर डिस्कसिंग विद अदर्स, यू डोंट नीड टू डिस्कस विद अदर्स अबाउट योर बॉडीली प्रॉब्लम्स unless it's a doctor or somebody, like कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आप उनसे बात कर रहे हो, बस उतना ही. और किसी से बात करने की, डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एनर्जी आपके बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि मुंह से कही हुई बात एफर्मेशन हो जाती है. सो इसीलिए एक्सप्लेन करना इज डिफरेंट, बट लाइक सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, और अदरवाइज मन में क्या चल रहा है थॉट्स में, दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ. ओके, सो थॉट्स में ये है, जैसे यही चीज मैंने आपको शुरू से बताई है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, आपको ये जैसे पैरट की तरह रटना होता है, वो करना होता है. इसके अलावा जो मैंने चीजें बताई हैं आपको, पीपल हु जॉइंड इन लेट फॉर द सेशन, जिन्होंने 6:10 के बाद ज्वाइन किया है, प्लीज यूट्यूब पे इसको सुन लीजिएगा आज वाला. So I can't see recording happening anywhere. Is the recording happening? Can you see that on the screen? Yes, ma'am. Acha. So please go back and listen to that 6 to 6:10 जो मैंने शेयर किया था, बिकॉज उस चीज का रोल बहुत बड़ा है हमारी हेल्थ को इम्प्रूव होने में, कि मैक्सिमम आपको 10 बजे तक सो जाना है. सो नाउ एज दीप्ति एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको ये बता रही हैं कि आपकी बॉडी में सारी एनाबॉलिक एक्टिविटीज 10 से लेके 1 बजे तक होती हैं गहरी नींद में. अगर आप, एनाबॉलिक का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, लाइक फॉर्मेशन, ये जो सारी चीजें होती है, अच्छी चीजें, अच्छी चीजों को हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं. एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक होते हैं 2 वर्ड्स. एनाबॉलिक मीन्स रिस्टोर होना, कंस्ट्रक्ट होना, चीजें बनना, एंजाइम्स बनना, आपके इम्यून सेल्स बनना, आपके आरबीसीज बनना बोन मैरो के अंदर, हॉर्मोन्स बनना, ठीक होना, रिपेयर होना टूटी हुई जगहों का, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में 10 से लेके 1 बजे तक होती है इन डीप स्लीप. ओके, नॉन रेम स्लीप हम उसको बोलते हैं. सो डीप स्लीप में ही वो होती हैं. अगर आप जागे हुए होते हो 10 से लेके 1 बजे तक, तो आपकी वो चीजें डिले होती हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस मे नॉट सेट, बिकॉज हार्मोन्स बनने का टाइम ही 10 से 1 होता है, और वो गहरी नींद में ही सारी फैक्ट्रीज हमारी बॉडी की. सुबह जो लोग वर्कआउट भी करते हैं, लाइक दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल, तो उन्होंने सुबह में भी 7:30 से 8:30 वर्कआउट किया था, लेकिन उनके मसल्स रात को ही बनेंगे, और उनका जो डॉम्स इफेक्ट, मतलब जो भी डैमेजेस होते हैं हैवी वेट कभी कभी उठाने से मसल सोरनेस भी हो जाती है ना, वो भी उनका रात में ही ठीक होता है, वो उस वक्त नहीं होता है. और गहरी नींद में होता है. अगर आप जागे हुए होते हो तो नहीं होता है. इसीलिए पीपल हु स्लीप लेट, दे विल सफर फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओएस को टाइम लगता है, या ब्लड प्रेशर बहुत आराम से कंट्रोल में नहीं आता, या मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज ब्रेन को रात को श्रिंक होने की जरूरत होती है. हमारा ब्रेन रात को 60% श्रिंक होता है, ठीक है, ताकि उसके बीच में स्पेस बन जाए जहां से उनकी क्लेंजिंग हो, स्क्रबिंग एंड क्लेंजिंग होती है ब्रेन सेल्स की. वो भी रात को होता है,
गहरी नींद में, और ये सब 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है रात को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको आज के, क्योंकि आज हेल्थ वाला चैप्टर था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बता दी थी कि अपनी लाइफस्टाइल में आपको ये चेंजेस करने की जरूरत है। एंड आई नो दैट पीपल बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, बट वो फिर वो आदत, क्योंकि कोई भी चीज आप रिपीटेडली करते रहोगे ना तो वो आपकी आदत बन जाती है, और वो अगर आदत बन गई एक बार तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हैबिट्स आर जस्ट समथिंग दैट यू कीप डूइंग ओवर एंड ओवर अगेन। एवरी डे यू सेइंग चलो अभी तो 9:30 बजे हैं, अभी बहुत टाइम है, वो 9:30 कब 11:30 बज जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए फोकस ऑन योर हेल्थ नाउ, it is very important. Your body is what stays with you from the day you are born to the day you're dying. So look after it, treasure it. Okay, there is no fun in laughter happening in the night and you're troubling your body, a lot. And because of that, सारा जो restoration revival techniques हैं वो सब नहीं हो रही है ना, वो सब नहीं हो रही हैं, वो नहीं हो रही है क्योंकि आप जगे हुए हो। उनके लिए सोना जरूरी है, वो भी नॉन रेम स्लीप, डीप स्लीप जिसको बोलते हैं, उसमें वो रिपेयर इन में। और वैसे भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लीप को हम डीप स्लीप ही बोलते हैं। 3 तरह के स्लीप होते हैं, इंटरमीडिएट एंड शैलो स्लीप। शैलो स्लीप सुबह की होती है, ठीक है, तो डीप स्लीप होती है रात के टाइम बिटवीन 10 and 1। सो गेट इन टू दैट हैबिट धीरे धीरे, है ना। अगर 12-1 बजे सो रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी कर दो, उसे थोड़ा जल्दी कर दो, उसके बाद आदत पड़ जाएगी जल्दी सोने की। अपने आप 9 बजेगा, आपको यौन आनी शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा कि ओ आई जस्ट नीड टू रेस्ट, माई टाइम्स अप नाउ। So this is how you get into that habit of, like a good lifestyle. And Benjamin Franklin's poem, Early to Bed, Early to Rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Remember that poem. He has not written it just like that. He was a very learned man. Okay, so whatever he did always carried a meaning. So go on that poem, Early to Bed, Early to Rise, makes a man healthy, सबसे पहले, wealthy, and wise. That means physically, mentally, and emotionally, आप बहुत ज़्यादा heal होते हो, revive होते हो when you follow that kind of a lifestyle. ओके, एंड देन जो भी स्लीपिंग पिल्स या कुछ आप पहले ले रहे होगे उन सब की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपकी बॉडी में से अप्रोप्रिएट हॉर्मोन्स निकलने लग जाते हैं, बिकॉज यू आर इन टैंडम विद द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी जैसे बाहर का होता है सनसेट सनराइज साइकिल फॉलो करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी सनसेट सनराइज साइकिल से ही काम होते हैं। सारे काम सनराइज के हिसाब से ही होते हैं। मेटाबॉलिज्म हाईएस्ट सुबह को होता है, फिर बहुत सारी चीजें होती है जो मॉर्निंग में होती है। मॉर्निंग में आप कुछ भी खाओ आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। वही चीज अगर आप 5 बजे के बाद शाम को खाना पीना शुरू कर दो तो आपका बॉडी वेट बढ़ने लग जाएगा, बिकॉज हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म उस वक्त इतना हाई नहीं होता, बिकॉज सनसेट होने वाला होता है। सो इसको हम फिजिकली सर्केडियन रिदम बोलते हैं। बॉडी के अंदर जो सनसेट सनराइज, बाहर होता है तो सूर्योदय सूर्यास्त बोलेंगे, बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम मीन्स योर बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सनसेट सनराइज साइकिल। ओके, सो वो हमारी बॉडी के अंदर वैसे ही चल रहा होता है। हमारे हार्मोनल इफेक्ट आप देखो, हमारा डाइजेस्टिव इफेक्ट दे दो। तभी तो हमने पहले एक बार एक और कोट पढ़ा था जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ क्वीन, एंड डिनर लाइक अ पॉपर, लाइक अ बेगर। सो व्हाई इज इट रिटन दैट हैव डिनर लाइक अ बेगर? There is some reason to it, no? But whenever people party, whenever people are doing something, the focus is always on having a heavy dinner. Sometimes there is even a gajar ka halwa after dinner, so there's always a dessert also. Whereas your body does not want to have anything heavy at that point of time. So it's always better खाने पीने का टाइम काम आप 6, 6:30, 7 बजे तक निपटा दो, and by 9 you have to come to bed. Okay, and we don't recommend people to go to the gym and all that in the evening timings. However, you can do your work. So, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, that nutrition, a good bodily care, all this is equally important other than doing gratitude. So, I know where everybody is going wrong. This is the reason I'm addressing that issue, because gratitude तो मैं हमेशा बोलती हूँ, gratitude के मामले में तो आप लोग diamonds हो, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब hats off to the depth and level of gratitude that all of you do. ठीक है, so I'm not focusing on that today because I know the problem is there. Okay, so please address the problems I've just mentioned. They will create miracles in your life. Okay, that now, having said that, now we will come back to the practices of today. So it says very clearly that जब भी physical कोई issue होता है तो हमारा inadvertently, इनवॉलेंटरली अटेंशन उसकी तरफ जाता है कि मुझे वहां पेन हो रहा है, वहां पेन हो रहा है, मैं एल्बो में पेन हो रहा है, या मुझे ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, मुझे बहुत लाइक बर्पिंग हो रही है, मुझे डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा, या आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, मुझे बहुत इनहेलर्स एंड पंप्स लेने पड़ रहे हैं।
तो इस तरह की चीजें हमारे बार बार हमको याद आती है। या डायबिटीज है तो पूरे टाइम आपको याद आएगा कि शुगर हो रही है, शुगर हो रही है, उसकी वजह से आप खाना नहीं खा पाते हो ठीक तरीके से, बिकॉज ऑब्वियसली सोच समझ के खाना पड़ता है ना, अगर हाई ब्लड शुगर होती है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में जैसे बैठी रहती है ना, चेयर लगा के, सीट बेल्ट लगा के, तो ये चीज दिमाग में बैठी रहती है दैट मुझे फिजिकली ये वाला इशू चल रहा है, जिसकी वजह से फोकस, अटेंशन और एनर्जी बीमारी पे ज्यादा होती है। इसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पाती है। इसीलिए जैसे दिमाग में आए, माइंड इज हाईली ट्रेनेबल। ट्रेन योर माइंड टू क्रिएट द थिंग दैट यू डिजायर। सिंपल. Okay, it's a mold, it's a clay which you have, so give it that shape, that how you want to see it. So if you want to see it as perfect, healthy, etc., please focus. Thank you for my perfect strong lungs. Thank you for my healthy heart, healthy and strong heart. Okay, thank you for my amazing digestion system that allows me to eat anything and keeps me very very healthy. Thank you for my immunity that always keeps me healthy. My body is able to fight against any kind of a thing, any infection. I'm always healthy. Thank you for that. I'm always on a high energy. Thank you that my hemoglobin is always above 12. It is so amazing. Thank you. So this is what you have to keep repeating to yourself, especially at those moments when you're going low in terms of your health consequences. Okay. सो आज की प्रैक्टिस में यही होगा दैट हमको 3-5-1 टेक्निक करनी है। 3 फॉर द पास्ट, बचपन से लेके अडल्टहुड तक ऐसे 3 मोमेंट्स जब आपने बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय की है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द टाइम दैट इन द स्कूल, व्हेन वी हैड दैट स्पोर्ट्स मीट, आई वाज प्रैक्टिसिंग एवरी डे, एंड रनिंग सो मच, एंड आई कुड एक्चुअली गेट अ गोल्ड मेडल। सो ऑब्वियसली हाई एनर्जी थी, है ना उस वक्त, मतलब इतनी अच्छी हेल्थ थी कि रोज आप प्रैक्टिस कर रहे थे स्कूल में अपनी स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक मीट के लिए, और रिहर्सल्स हो रहे थे, और आप फिर फाइनली आपने एथलेटिक मीट में पार्टिसिपेट किया। एक वो मोमेंट हो सकता है। Then second moment, that I'm so grateful that when I went to Dubai, I was in such a high energy from morning to evening. We were walking and we were sightseeing and enjoying the beauty of Dubai, and it was so amazing. सो तब आपने हाई एनर्जी अपनी अपनी हेल्थ को एंजॉय किया था। सुबह से रात आप घूम रहे थे दुबई में, अलग अलग जगह पे गए, है ना। सो इस तरह अब थर्ड वाला आप कुछ और पिक करो। मे बी यू वेंट टू वैष्णो देवी एंड यू काइंड ऑफ लाइक took that climb by walking yourself, and you could come back so easily. कितनी अच्छी हेल्थ एंजॉय की थी। इस तरह से 3 हमको पास्ट के ऐसे इवेंट्स लेने हैं जब हमारी हेल्थ बहुत अच्छी थी और आपने बहुत मतलब ऐसे पावरफुली कोई काम किए थे, फिजिकल बॉडी को यूज करते हुए। वो 3 हो गए पास्ट के। अब करेंट 5। सो 5 में इवेंट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। 5 में हमको बॉडी के फंक्शंस लेने हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक इम्यून फंक्शन बहुत अच्छा। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई इम्यून सिस्टम दैट ऑलवेज कीप्स मी हेल्दी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट दैट pumps blood throughout the day. I'm so grateful to my digestive system that I'm able to eat anything. Sometimes I eat a pizza, sometimes I eat this, and I'm able to digest anything. I'm so grateful to my body weight, that makes me look so good, feel so good, and keeps me always healthy. I'm so grateful to my skeletal system, my bones and muscles, that are so healthy. So, इस तरह से 5 हो गए ये। अब 1 फ्यूचर के लिए हमको करना है, ठीक है। अब देखो कि आप मोस्ट व्हाट यू वांट इन योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ में आपको अभी क्या चाहिए, ठीक है। आपको रात में बहुत अच्छे से सोना है। सपोज फिजिकल हेल्थ में ये चीज है जो आपको बहुत, मतलब मे बी नींद नहीं आती, अभी हो सकता है दवाइयों का सपोर्ट लेना पड़ता हो या जो भी है। तो करेंटली अब हम ये सोचेंगे, एंड थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द ग्रेट rejuvenating baby like sleep that I get every night. सो दिस इज वॉट, और वॉट एवर इट इज, मतलब जो भी इशू है हमारा, है ना। सो वो चीज हमको सोचनी है दैट, एंड देन उसको 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है कि आप कितनी आराम से लेटते हो, आपका मैजिक रॉक हाथ में रहता है, और आपको उसी टाइम जैसे ही आप करते हो आपको नींद आ जाती है, और सुबह आप बहुत फ्रेश उठते हो, और शाम से ही आपको लगता है कि नहीं मुझे सोने का टाइम हो रहा है, माई बॉडी नीड्स रेस्ट, आई वॉन्ट टू स्लीप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लाइक विजुअलाइज. So you have writing plus visualizing, but visualizing is only for the future. Visualizing you don't have to do for 3 and 5. You have to do only for 1.
Okay, so that you have to visualize that how fresh you are, you waking up, आपकी lifestyle इतनी अच्छी हो गई, अब आपको कितनी ज़्यादा energy लगती है पूरे time body में. So this is how you have to be doing it. So 3-5-1 technique. ठीक है? और बस यही है. और सुबह की practice count my blessings, जिसमें हम अलग अलग blessings लिख रहे हैं हम. ठीक है? और रात का magic rock practice. Think through the day and pick out the best one and say thank you for it and then go to sleep. And then you watch your life, how miraculous it is. Just get used to miracles happening in your life and keep telling to yourself, thank you, universe, that my life is always so full of magics and miracles. I'm just loving my life. I'm loving the zone I'm in. I'm loving creations. I'm loving the creative powers of my life. Thank you, universe. So universe always loves appreciation. The moment you've appreciated, there it goes. It says that, okay, have a lot of it. Okay, this is how it is. You ask for one thing, you'll get so many. This is how beautiful life is. And, channel your goodness to others also. It's very important. Every experience that happens in your life is not just for your life, it is for the others around you who get to see that how by doing this your life is changing. अगर आप शेयर करना बंद कर देते हो लोगों के साथ, like you just want to fill up your cup but you don't want to give it to others, it's like that, है ना? So इसीलिए human beings are social animals. जब तक आप अपनी लाइफ से किसी और की जिंदगी को इम्पैक्ट नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आने ब्लॉक हो जाते हैं. तो उस फ्लो को चालू रखो. जैसे ही आपने कुछ मिरेकल देखा, मैजिक देखा, आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंस आया, immediately process it. Tell the others. People feel so encouraged. In these sessions also, the best part becomes the experiences that people share. So I was talking to Aarti yesterday and I was telling her that मेरा पूरा दिन वसूल हो जाता है क्योंकि मैं अपने मतलब सुबह फ्रेश और जल्दी उठने के लिए मुझे बहुत चीजें अपनी जिंदगी में ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं बिकॉज आई एम अ बिजी पर्सन विद 100 things happening during the day. My profession is something else. I'm not a law of attraction coach or anything or a life coach here. The moment it is 7:15, there is a switch off. Okay, now is the time to apply those practices. So I also need time to brew, apply, do all those things. And professionally, I work in an organization. Then before that, I have to go to the gym, then I have to get ready, then I have to do that. Then I come back from work, which is pretty late sometimes. Aate hi khana. My evening practices again. I have a certain ritual that I follow. है ना? So वो सारी चीजें करने में मतलब बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ता है मुझे कि मैं बिल्कुल मतलब 9 बजे इमेजिन मैं अपनी क्लासेस मिस कर रही हूँ और उनको मैं बाद में देखती हूँ लिंक के साथ सिर्फ इसलिए कि मैं सुबह आपके लिए उठ पाऊँ. ठीक है? सो मुझे बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. तो मेरा तो वसूल हो जाता है जब आप लोग बोलते हो दैट लाइक ये एक्सपीरियंस हो रहा है, वो मैजिक हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है. So it becomes like it gives so much meaning to my organizing my entire day. To be able to wake up fresh to take. I never go back to sleep after the sessions. I immediately complete my affirmations. Kabhi kabhi jo reh jati hai because I write a lot. And then I go to the gym and then I have to go to work. So it becomes like that. And work, I am always the first person to reach. Just want to tell you that. So discipline has to be to that extent. There's so many people in office. I'm always the first person. Safaiyan ho rahi hoti hai tab office mein. That's when I reach work. Once in a while I might get late, but otherwise I'm always the first person because this is also the teachings that has come from the mentors. You can't be sloppy and you can't be like, like kabhi kuch bhi ho raha hai aise. So it is like always. So that discipline pura vasool ho jata hai when I see that your lives are changing. So for all of us, whenever any shift happens, always encourage others. सब लोग बोलते हैं ना कि उस दिन हमने ये वाला वो सुना था, उससे हमको ये encouragement हुआ. So we all touch each other's lives, and that's the best part about being in a group, in a community together who are in the same zone. So even if like we are 50 of us in the same zone, like hamara energy, we will meet as if we are not meeting for the first time, that we've always known each other. This is the impact of the energy and we get affected by each other. Anyone who's fought illness is sharing the experience. The other person who are battling the illness, they get encouraged that, oh, this is what she did and this is what I can do. So it's always very, very encouraging other than because वो सब practical applications होते हैं जो करके किसी की life में miracles create हो रहे हैं, है ना?
So बस ये this is the chapter for today 3, 5, 1. So let's try and do it as early as we can in the morning, but अच्छे zone में बैठ के ये वाली practice करना. And now we go to the other book, which is Hero again by Rhonda Byrne, where we are reading about commitment. Okay, so yeah, Deepa, Vora, you reading for us today? Yes, ma'am. Good morning. Yeah. Good Good morning. Is it your morning. debut reading today, Yes, ma'am. or have you? Okay, congratulations. You got the Thank slot. you. Thank you. Thank you very much, ma'am. पढ़िए पढ़िए जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, हाँ पढ़िए. yes. Okay. Liz Murray, there is something about deciding that whatever you have at the moment is enough to do whatever it is you need to do. If you always think you are missing one more thing, if you think I have to have this in order to, you are waiting for the right time. There is no right time. The right time is never in the future, it is now. And your full commitment is the cue that opens the doors to your dream. It will never happen the other way around. Until you make a commitment, you will only see walls. ओके इट सेज कि अगर आप वेकेशन पे हो और आपने कोई ड्रेस पहनी और आपको लग रहा है दैट यू हैव पुट ऑन वेट, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, और आप वेकेशन पे हो, सो यू डोंट हैव टू से दैट 2 दिन के बाद जब मैं वापस जाऊंगी तब मैं अपने डाइट को रेगुलेट करूंगी. आपको उसी वक्त से करना है, ठीक है, उसी दिन से, उसी वक्त से जब आप वेकेशन पे हो, ठीक है, माइंडफुल हो जाओ उसी दिन से. डोंट वेट दैट मैं आई विल डू इट वंस आई एम बैक टू माई होम टाउन एंड देन आई लुक आफ्टर माई हेल्थ एंड देन आई विल स्टार्ट वॉकिंग. Please start walking the day when you're there at the vacation on that very day. This is what it means. Okay, so whatever it is, don't procrastinate. ठीक है, डोंट से दैट इसको मैं परसों से करूंगी, इसको मैं कल से करूंगी, अभी तो मेरे 2 दिन बहुत बिजी है, उस दिन से करूंगी. चाहे आप 10 मिनट करो बट उस दिन से शुरू करो, ठीक है. दैट इज व्हाट इट मीन्स. सो डोंट से दैट ये मेरे पास आ जाएगा ना फिर मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, वो वाला क्लाइंट मुझे मिल जाएगा. अरे यूनिवर्स कहता है, यूनिवर्स से पैसे मांगो. ये मत बोलो कि क्लाइंट आ जाएगा और वो पर्टिकुलर क्लाइंट ही इतना हाउ में अगर हम जाएंगे तो हमारे काम नहीं पूरे होते, है ना. अगर यूनिवर्स से आप अपना वाई स्ट्रांग रखो, क्यों चाहिए पैसा. जो इब्राहिम हिक्स की किताब है आस्क एंड इट इज गिवन, उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे आपके बहुत क्लियरली कि आपको ये चीज चाहिए, आपको अपने बिजनेस लेके जाना है, सपोज 100 crores के, चलो आई विल नॉट टॉक अबाउट 100 crores, लेट मी टॉक अबाउट 5 crores टर्नओवर या नेट प्रॉफिट 5 crores. अगर बिजनेस लेके उतना जाना है तो आप अपनी विश लिस्ट में ये डालो, thank you universe that my business is giving me a net profit of 5 crores every quarter, every half year. वो आपकी मर्जी है, आप देखो अभी कितना है उस हिसाब से आप लिखो, है ना. आप ये मत बताओ यूनिवर्स को, यूनिवर्स डज नॉट लाइक पॉइंटिंग फिंगर्स एंड डायरेक्टिंग. ओके, सो नाउ डोंट टेल कि इस क्लाइंट से पैसा आ जाए, उस वाले का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वो वाला मेरा वैसे वाला बिजनेस चल पड़े. नहीं, पैसा आपके पास आने का जरिया अपने आप ढूंढता है, वो हमसे बड़ी एनर्जी है, ठीक है. तो ये ज्यादा इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस देने की जरूरत नहीं होती है. आप बस अपना, आपका डिजायर ये है कि 5 crore नेट प्रॉफिट चाहिए, आपको जेब में इतना पैसा चाहिए, ठीक है. अब यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है कि वो कहाँ से आना होता है. सो पैसा आपके पास आने का जरिया ढूंढ लेता है. तो इसीलिए अपना दिमाग उन चीजों में मत लगाओ जो वर्क नहीं करती हैं. तो उन्होंने
जो इब्राहिम हिक्स की किताब है उन्होंने उसमें यही बताया है कि आप ना अपना वाई, क्यों चाहिए आपको पैसा, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप बहुत लोगों को एम्प्लॉय कर पाओगे जिनके लाइवलीहुड्स आप चलाओगे। आपको ज्यादा इसलिए पैसा चाहिए क्योंकि दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर कंट्रीज और जगह हैं जहाँ पे आपको जाने का बहुत मन है। आपको इसलिए पैसा चाहिए कि आप अपने बच्चों को बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, या आपको इसलिए पैसा चाहिए कि आप एक फैमिली बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो जो बहुत अच्छा है, हो सकता है आपको 5 स्टार होटल खोलने का मन हो, आपको इसलिए पैसा चाहिए। आपको इसलिए पैसा चाहिए बिकॉज आपको कार्स बहुत पसंद है और आपको अपने लिए एक लग्जरी कार खरीदनी है। आपको पैसा इसलिए पसंद है क्योंकि आपको प्रॉपर्टी बिल्ड करनी है कोई किसी स्पेसिफिक जगह पे। ये सब सोचो कि पैसे से क्या करना है, ये सब सोचो। ये सब मत सोचो कि वो क्लाइंट मिल जाए, मुझे उस वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वो वाला आ जाए तो मजा आ जाएगा। दैट्स यूजिंग ह्यूमन स्ट्रैटेजीज। ह्यूमन स्ट्रैटेजीज डोंट वर्क इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्सल स्ट्रैटेजीज। ठीक है? सो द लेवल ऑफ कमिटमेंट इज जस्ट दैट यस आई विल डू दैट फ्रॉम नाउ एंड आई हैव गिवन यू हाउ टू डू इट ऑल्सो, है ना? दिस इज द वे द प्रैक्टिसेस हैव टू बी डन। तभी तो नहीं आता है ना? जैसे मैंने आपको बताया था दैट somebody is taken my money from my account, okay? So मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि मुझे उसी से पैसा आ जाए, मतलब दैट्स नॉट माई प्रेयर। आई एम वेरी क्लियर दैट वो जो मेरे 2 लाख रुपए उस पर्सन ने लिए हैं, है ना, गलत गलत तरीके से लिए हैं, बट वो पैसा किसी की बहुत अच्छी एजुकेशन, उसके बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज हो या कहीं पे ऐसा जाए। मेरा वाला पैसा तो बहुत अच्छे कॉज के लिए जाएगा, ये बहुत क्लियर है। बट मुझे अब कहाँ से पैसा आएगा मैं बिल्कुल स्ट्रैटेजाइज नहीं कर रही, मैं नहीं सोच रही उस बारे में। मुझे ये पता है दैट 2 into 5 होगा, ये मैं बहुत क्लियर हूँ। तभी मैं वो 10 लाख का नंबर लेके, ठीक है 2 लाख लिए कोई बात नहीं, बट 10 लाख मेरे पास आने वाले हैं। तो मैं इस वक्त कैसे जोन में रहती हूँ? Am I crying? Am I complaining? Am I saying no, I'm not doing any of that? मेरे पास रहने को घर है, मेरे पास सब कुछ है, everything I have right now, and I'm just blessing that money more and more. So universe knows कि इसके घर में जब भी जाओ, दीप्ति के घर में जाओ तो इतनी ज्यादा इज्जत अफजाई होती है, इतनी हाई क्वालिटी ऑफ बात होंगी, तो why not give more? है ना? It works like that. So this is so whatever it is that we have to do, keeping ourselves in a good feeling zone, good frequency, no matter how bad the situation is. Okay, it is just a test तो होते रहेंगे। जब बहुत बड़ी चीज होनी होती है तो बड़ा सा एग्जाम भी होगा, उसमें पास हो जाओ बस। अपने आप को अच्छी फीलिंग फ्रीक्वेंसी में, ब्लेसिंग के जोन में रखो, अपने आप सारा सब कुछ ठीक होने लग जाता है। दैट इज हाउ इट इज। And being committed to what you want to do is very very important. Okay, don't get swayed। ऐसे थोड़ी थाली के बैंगन की तरह कभी इधर लुढ़क रहे हैं कभी उधर लुढ़क रहे हैं, ज्यादा लुढ़कना भुड़कना हमको नहीं करना है ना? Because that faith, that commitment that we have towards achieving a goal is very very important. So just go, be a go-getter, and tell this to yourself that I'm a go-getter. I achieve everything I desire with ease and joy, because life is easy and effortless. Life is beautiful. And remember, I am born to lead and shine. So anywhere where you're falling short of leading and shining is not then, है ना? Because you are born to lead and shine, and you better be that, because life is beautiful, easy and effortless, and everything that you desire comes your way. Everything that I desire comes my way. That is what you have to keep telling yourself, that you have a perfect health, you enjoy that. Thank you universe that I enjoy the best of health. Okay, so that is what you need to continue to tell yourself, and that is the language that the universe loves to hear from you. Only then it says tathastu, so it is, and it will be yours. Okay, so that's very important. Don't think that ये हो जाएगा फिर मैं ये कर लूंगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा फिर मैं ये खुश हो जाऊंगी। खुश आपको अभी रहना पड़ेगा। Happiness brings in more happiness. It's not that you get something and then. So that's what Liz Murray is trying to explain to us, that today is the day and right now is the moment. And that is the only thing right now, what your mentality is going to open the doorways in front of you. हाँ जी। देखो मैं देखो इधर आइयो मामा के पास। दीपा, यस मैम। मुश्किल हो रही है आपको पढ़ने में? नहीं नहीं, वो अच्छा। किसी का वीडियो दिख रहा था। अच्छा, थैंक यू दीप्ति मैम। माइकल एक्टन स्मिथ, you have to really commit. You can't do it
half-heartedly. When you really commit, every sinew in your body, your subconscious mind, and your conscious mind, whether you are awake or dreaming, is working toward whatever you are trying to achieve. And that makes all the difference. या वो शाहरुख खान वाला डायलॉग है ना, जब भी आप कोई डिजायर फ्लोट करते हो, सारी कायनात आपके उस डिजायर को फुलफिल करने में वो लग जाती है. आई डोंट नो इफ समवन रिमेंबर्स, कैन प्लीज अनम्यूट एंड शेयर दैट डायलॉग. Okay, it is, I think, from Om Shanti Om movie, which had Deepika Padukone. मैम वो है, अगर आप मैम, वो शिद्दत से था किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है. हाँ, थैंक यू सो मच. तो बहुत शिद्दत से अगर आपको चाहते हो, मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपका है दैट मैंने तो ये करना ही है, कम वॉट में, दिस इज माय गोल. सो पूरी कायनात मीन्स पूरा ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, जो मैग्नेटिक फोर्सेस है, वो आपकी जिंदगी में अलाइन होके उसको मैग्नेटाइज कर लेंगे आपकी जिंदगी में, है ना. पूरी कायनात, सारे प्लैनेट, सन, मून, everything, the galaxies, they are all working hard to get you that thing that you really desire. So hence it is so important to keep floating the desires and expanding your desires. Okay, that's also very important. Hanji Deepa, you wala pad lo and then we'll wind up. Okay, thank you, ma'am. Lord Hamilton, when you commit, situations arrive for you. I'd like to go, quote, I am so smart. I thought of this. I unquote. But no one's that smart. Those things were provided because you committed to the belief that it was possible. या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें लगता है कि हमारी वजह से हुआ है, हमने सोचा था, हमने मेहनत की, फिर हमने ये अचीव कर लिया. नो, देयर इज सम फोर्स बिहाइंड इट. ओके, विच इज दैट मिरेकल पावर विच इज देयर इन द ब्रह्मांड. That is what has helped us to achieve. Okay, so always say thank you. Everything is a gift. Even that today's health that we enjoy. जैसे आज का दिन है, सैटरडे है, 23rd of December है, ठीक है, जो आप इंजॉय करोगे आज का पूरा दिन, वो आपको गिफ्ट में मिला है. सो इसीलिए उसके लिए थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है. ये मत सोचो कि मैंने ये कर दिया. जैसे टुडे आई एम प्लानिंग टू बेक अ केक विच आई हैड थॉट, बिकॉज आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने सोचा था कि मैं 2 केक बनाऊंगी. एक मैं वनीला केक बनाऊंगी, वन आई मेक अ डार्क चॉकलेट केक. सो अब वो केक का अच्छा बनना ये नहीं है कि वाओ आई एम सो स्किल्ड, आई एम सो केपेबल. नो, उसके पीछे, उसके पहले मैग्निफिसेंट आउटकम होगा. जैसे ही मैंने थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग केक दैट एवरीवन एंजॉयड, यू नो, एंड इट वाज सो परफेक्ट, वैसे ही यूनिवर्स ने मेरे केक में अपने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए. एंड नाउ दैट केक विल बी मेड. मैग्निफिसेंट आउटकम हम सबको पता है, हम जो करते हैं, है ना. सो अब वो काम इतने अच्छे से हुआ तो मेरी वजह से थोड़ी हुआ, मेरी स्किल है, ठीक है. मैं तो गड़बड़ भी बना सकती थी. वो यूनिवर्स की पावर्स हैं कि मैंने पहले से ही थैंक यू बोल दिया यूनिवर्स को. थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग, टेस्टिएस्ट एंड द बेस्ट केक दैट आई कुड बेक. And it unfolded. So it's not because of me. It is someone else up there doing it. There is some force around us all the time. I told you ना, जैसे आप gratitude के zone में रहते हो ना, it is like 100 angels are surrounding you. तो आप क्वीन की तरह सड़क पे चलो. अदृश्य है वो सब, इनविजिबल है, ठीक है, बट वो आपका प्रोटेक्शन है, वो आपका फोर्स है. वो आपको गलत रास्ते में, जैसे आप लेफ्ट टर्न लेने लग जाओगे ना, वो फोर्स के थ्रू आपके दिमाग में उतर के आपको राइट लेके जाएंगे. क्योंकि उन अदृश्य फोर्सेस को ये पता है कि लेफ्ट आगे जाने वाले रास्ते में गड्ढे हैं और फिर उसके बाद खाई है, ठीक है. तो वो फोर्स आपके दिमाग में कुछ आएगा या कुछ ऐसा होगा कि आप वो राइट चले जाओगे. अगर रोड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही तो आप राइट की तरफ जाने लग जाओगे, अपने आप ही हो जाएगा. क्यों? बिकॉज देर आर hundreds and thousands of protective forces around us. वो लोग, वो spirits, वो angels के फॉर्म में हमारे साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि you are a grateful person.
ठीक है, मतलब आपके मन में बहुत हाई फीलिंग फ्रीक्वेंसी है, तो वो प्रोटेक्टिव पावर, वो मिरेकल सब्सटेंस या जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, वो गॉड, एंजल, तो वो आपके साथ है एंड विल बी टेकिंग यू ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड एंड इट यू विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग इनटू दैट ditch of whatever. So this is how it actually works. So keeping the feeling frequency high is very important, and it is actually that force around us is making things happen for us. Even every सांस that we are taking is a gift to us, है ना? यूनिवर्स की तो है, वो एयर कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन, हम थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूनिवर्स ने पेड़ पौधे बनाए, वहां से ऑक्सीजन निकल रही है। तो उनको बोलो रोज जाके पेड़ पौधों को कि थैंक यू मुझे प्राण देने के लिए, मुझे मुझे जान देने के लिए, कि मैं, आप जो ऑक्सीजन निकाल रहे हो, मैं उसको ब्रीथ करके मैं जिंदा हूँ, उसकी वजह से मेरी बॉडी में एनर्जी है। हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हाँ, सब कुछ मिला हुआ है हमको, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन एन ऑटोमेटेड वे. So constantly being in that zone and being in that realization that your life is not because of us. The food that we have, you might cook a very good food, okay, you might have that skill, but कहाँ से, कौन ग्रो कर रहा है उसको, कौन लेके आ रहा है रिटेल मार्केट तक, फिर घर लाके, है ना? सो इस तरह से हर चीज के लिए थैंक यू के जोन में होना, then we get things छप्पर फाड़ के, and the life unfolds in the most miraculous way when we realize these little things in life that happens to us. ओके, सो इसमें जैसे लेड हैमिल्टन में ये लिखा हुआ है, जो सर्फर थे, दैट हमें ऐसा लगता है अगर हमने कुछ अचीव कर लिया होता है ना, ओ आई रियली वर्कड हार्ड फॉर इट एंड दिस इज व्हाट आई डिड एंड दैट्स व्हाट आई डिड, एंड नो, there was some force behind it. Okay, say thank you to that. So he says that don't think that I'm so smart, मुझे आइडिया आया, मैंने ये किया और ये हो गया. It doesn't work. He says no one's that smart. Those things were provided because you committed to the belief that it was possible. And the universe became that force behind it. And it said, Tathastu, you want to do this? Because आप बहुत शिद्दत से वो चाहते थे करना, और आपने उसमें बहुत ग्रैटिट्यूड, मतलब गुड फ्रीक्वेंसी में थे, अपने आप यूनिवर्स से, तथास्तु, हैव मोर ऑफ इट, so it is. This is what you want, you have more. ओके, और जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो आपको चीजें बहुत जल्दी जल्दी मिलने लग जाती है, ठीक है? सो दैट्स हाउ ब्यूटिफुल दिस लाइफ इज, एंड you're just a channel of goodness to others. So never think that you're filling up your own cup but not sharing with others. Everything has to be shared with others, so this is how life is. So this is how much. So thank you, Deepa, for reading, and hope to listen to you more. Thank you, ma'am. Thank you very much. आपने हर सेंटेंस के बाद थैंक यू बोला है, आपका इतना इनग्रेन्ड है, मतलब जब मैंने कहा कि स्टार्ट रीडिंग, तब भी आपने बोला थैंक यू दीप्ति मैम, इतना ज्यादा. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू लाइक लिसन टू दैट. लाइक आई डोंट नो, आई थिंक 5 थैंक यूज आपने इस पूरे कोर्स में बोले जब से आपने पढ़ना शुरू किया है अभी. सो थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. ओह, लॉट्स ऑफ हैंड्स रेज. हम क्विक करके शेयरिंग्स लेते हैं, ठीक है? सो वील स्टार्ट विथ नेहा. whenever I am मतलब मुझे जब चाहिए होता है, जो ऑटो चाहिए या समथिंग, तो मैं रोड पर खड़ी होती हूँ, सोचती हूँ थैंक यू मुझे ऑटो मिल गया, एंड सामने में आकर खड़ा हो जाता है इन ट्रैफिक एवरीवेयर. जब भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, बस ट्रैफिक खत्म हो जाता है, मैं निकल जाती हूँ, ऐसा होता है. एंड अनदर थिंग, आपको हमेशा बोलते हैं ना, नंबर हैव पावर्स. तो बहुत सारे जैसे नंबर होते हैं जो फॉर लूजिंग वेट, number for affirmation. Is it really works? If I say number is powers, that means it has powers. Now, why are planets 9 in number? There's a reason behind it. Why Brahma, Vishnu, Mahesh have created this Brahman? There's a reason for it. है ना? क्यों दुर्गा जी के 9 रूप होते हैं? क्यों नवरत्न होते हैं? इन सब की पावर होती है, ठीक है? तो number has power. There are 5 elements outside. There are 5 elements inside us. Our body is also made with 5 elements. And these 5 elements have made everything possible. So it is like dharti, then water, then fire, then air, and ether, which is space. Body भी तो इनसे ही बनी हुई है. So yes, numbers do have power. मैम, आज मेरे साथ तो बहुत ही मतलब एक मिरेकल ही कह लो कि सुबह मैं उठी हूँ और मैं अपनी बालकनी में गई. 5 एलिमेंट्स को थैंक यू मैं रोज बोलती हूँ. मतलब महीने में 1-2 बार रह जाए मॉर्निंग में बात अलग है, वैसे मैं डेली बोलती हूँ. तो मैं बोल रही थी और बड़े अच्छे से फीलिंग के साथ बोल रही थी.
तब तक मेरी नीचे नजर गई तो एक गाड़ी की सिर्फ एक हेडलाइट जल रही थी। तो मैंने थैंक यू बोला कि इसकी दूसरी भी जल जाए, और मैम इंस्टेंटली वो दूसरी जल गई। इट वाज सो अमेजिंग, सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि मैं इसको बिना शेयर किए नहीं रह पाई। एक्चुअली आपने 5 एलिमेंट्स और नेचर को थैंक यू बोल रहे थे ना ब्रह्म मुहूर्त में। सो Yes, यू वर ma'am. अलाइनमेंट। सो जब अलाइनमेंट में होते हो देन योर क्रिएटिव फॉर्म इज द बेस्ट। पूरे दिन भर में हम कभी कभी सर्वाइवल मोड में रहते हैं। सर्वाइवल मोड में क्रिएशन नहीं होता है कभी भी, ठीक है। वो एक्चुअली लाइक क्रिएशन मोड सुबह के टाइम बहुत पावरफुल होता है। So good, thank you, because you actually added on to what I was saying, that in the morning in Amrit Vela, the creation is 10,000 times powerful. Thank you, Then ma'am. Thank you so much thank you for for sharing. everything you give, and इतनी शिद्दत से आप देते हो कि वो सच में पूरा होता है। वो तो होना ही है। वो यूनिवर्स की पावर है। मैं तो बस उनकी पावर्स को हम साथ में स्टडी करते हैं। But yes, thank you so much, Deepa, for sharing and always being in alignment. So yes, now we'll Thank go you, to ma'am. Shweta Nanda. Morning, ma'am. Morning, everybody. Morning. हमको कैमरा ऑन करना मैंडेटरी है, श्वेता। Ma'am, I'll just switch it on. I just wanted to express my deepest gratitude to you and the group, and you have been so kind to me. And despite the fact that I keep on falling off the wagon, you don't lose hope in me. So I'm very grateful to you. So I've recently won a 3rd position in this international competition for the best paper published. I lost the 1st position by 4 marks. I lost the 2nd position by 1 mark. But I'm just so grateful that I got that 3rd position, and it was again magical. I have fallen off the magic practice bandwagon, but I do want to share that I don't miss 2 practices. I start my day with gratitude and I sleep with the magic stone. So I wanted to just share with everybody that, these are the 2 bookends that one could use, starting and ending. Even if you're falling off like me, it could just work wonders. And I'm really grateful to you, ma'am, and to everybody. Thank you so much. Thank you, and many, many congratulations. It's not easy among so many universities and all. A paper gets published, and it's a big thing to actually get that kind of, accolades. And Dr. Shweta Nanda, अब आप हो गई हैं. So congratulations. Please be consistent in the practices, because that paper publishing is the beginning of your amazing new heights that you're meant to receive and reach. Okay. So thank you so much for sharing, and wish you many, many more victories. Yes, Priyanka. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. Ma'am, my sharing, actually, I was waiting for the sharing for, I think, 10 days तो हो गए मुझे, बल्कि ज़्यादा ही. I always had a pain in my left ankle. तो मैं जब भी स्कूल से आती थी रात तक ना मुझे लेफ्ट एंकल में इतना पेन हो जाता था, कोई रीजन भी नहीं है, कुछ नहीं. सो माय डॉटर यूज्ड टू मसाज, कभी कभी खुद मसाज करके सोती थी. सो लास्ट मंथ आई डिड इट प्रैक्टिस. छोटी छोटी तो प्रॉब्लम हर किसी को होती है, बट मैंने अपने एंकल के लिए ये वाली प्रैक्टिस की थी. एंड इट्स बिन 1 month, मैं भूल ही गई कि उस एंकल में कुछ था भी. So this, I was waiting for this chapter to come. कि when this chapter will come, only then I will share this sharing. So this is actually miracle कि जो एंकल के लिए मैं स्कूल से आते ही मुझे लगता था यार पेन है खड़ा होने में, अच्छा इधर खड़ी हो जाऊं, उधर लेफ्ट की बजाय राइट पे, जबकि आई एम नॉट ओवरवेट इवन. तो मतलब this is something really magic. And ma'am, I'm very, very busy, but I just want to tell everyone that practices I'm doing these days: 555, 369, happiness is my habit, 21 blessings I'm writing for my clinic and my school, then 108 thank you daily I'm writing, चेक वाला, नोट वाला, एक्सीलेंट हेल्थ वाला, वो सब मैं कर रही हूँ. एंड मैम एवरी डे इज फुल ऑफ मैजिक दीज डेज. जो अभी नेहा ने बोला कि ट्रैफिक तो कहीं मिलता ही नहीं है, मीन्स मेरे स्कूल का डिस्टेंस मेरे घर से अगर मैं बच्चों को ड्रॉप करते हुए जाती हूँ अप्रोक्सीमेट 45 मिनट्स लगता है, और मैं थैंक यू बोलते हुए निकल जाती हूँ 30 मिनट्स में. कई बार तो होता है 7:15 निकलती हूँ और 7:45 स्कूल पहुंच चुकी होती हूँ. मीन्स वो तो इतना मैजिकली वर्क करता है. वर्क प्लेस आपकी पे आई एम आवाज एंजॉयिंग. चली गई है, सिर्फ मुझ पे गई है. प्रियंका बोलो दोबारा. We are clear. She is मैम clear. एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल नाउ? नहीं, Ma'am, आवाज आ रही है my प्रियंका आपकी. my connection says it's unstable. ठीक है, ठीक हाँ है. जी मैम, हो सकता है.
और मैम मॉनेटरी ग्रोथ आई हैव टोल्ड यू कि आ ही रही है. येस्टरडे व्हाट हैपेंड, मतलब हर तरह से ग्रोथ हो रही है एंड माय चिल्ड्रन डूइंग एक्सीलेंट. बट दोनों बेटियां फर्स्ट आ रही हैं. बेटा क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है, ही जस्ट 10 बट ही इज प्लेइंग वेरी वेल. मतलब हर चीज में आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ. इट्स फुल ऑफ सेलिब्रेशन एंड आई कीप रिपीटिंग दिस थिंग द होल डे. माय लाइफ इज फुल ऑफ सेलिब्रेशंस फॉर मी एंड माय फैमिली. ऑल मोमेंट्स आर फुल ऑफ हैप्पीनेस. तो ये मेरे हर टाइम जुबान पे रहता है. लाइफ इज इजी, एफर्टलेस, ब्यूटीफुल. ये मैं बोलती ही रहती हूँ. तो कल क्या हुआ मैम, आई वाज ऑन लीव यस्टरडे. सो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मुझे सीपी जाना था. राजस्थली एम्पोरियम में मैंने कोई बेड कवर लिया था तो उसके थ्रेड्स निकल रहे थे. सो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आप आज चलोगे, तो ही सेड कि नहीं मैं बिजी हूँ, आज नहीं जा पाऊंगा. ऑल ऑफ अ सडन उनका अप्रोक्सीमेटली 1 PM कॉल आया कि ऐसा है चलते हैं और तुम प्लान करो, मैं आता हूँ 2 बजे तक, देन विल गो. आई सेड ओके, वेरी नाइस. तो मैम 2 बजे से मैंने 6 बजे तक का प्लान किया था कि वी विल रीच बाय 3, जबकि मतलब 1.5 आवर के अप्रोक्सीमेट लग जाता है ट्रैफिक को मिला के. आई प्लान कि हम 3 o'clock तक वहां पहुंच जाएंगे, देन हम वो चेंज करा लेंगे, ये करके हम 6 बजे तक वापस आ जाएंगे. मैम जो आपने अभी बोला, कई बार यूनिवर्स हमें गलत रास्ता इसलिए दिखाता है क्योंकि उसे पता है हम कहाँ जा रहे हैं. सो मैंने मैप में राजस्थली एम्पोरियम की बजाय क्नॉट प्लेस डाल दिया. पहले डाल रही थी, फिर मैंने क्नॉट प्लेस डाला, तो उसने घुमा के हमें पीछे वाली साइड से वो लेके गया. देन माय हस्बैंड सेड अरे ये तो गलत रास्ता ले लिया, बंगला साहिब के बैक साइड से आ रहे हैं. मैम हमने मतलब बिल्कुल वहां जाके पार्किंग मिली जो राजस्थली एम्पोरियम के एकदम सामने रोड क्रॉस करके थी. अदरवाइज लास्ट टाइम हमें बहुत दूर पार्किंग मिली थी, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ा था. हमें पता ही नहीं था, एकदम से वहीं एग्जैक्ट पार्किंग मिली. उतरे, हम चेंज कराया और सुबह वर्कआउट करते हुए ना आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि कचौड़ी खाने का मन है. मतलब बोलते बोलते मैं रह गई कि नहीं, अब वर्कआउट कर रही हूँ फिर कचौड़ी खाऊंगी, फायदा क्या है, छोड़ो. तो जैसे ही वहां पे उतर, मेरे हस्बैंड कहते हैं अब कचौड़ी खाएं. हमने ये तो ले लिया है, कचौड़ी और चाय खाते हैं हनुमान मंदिर के सामने, के बहुत फेमस है, बिकॉज मेरे पापा का वहीं स्कूल होता था. तो हनुमान मंदिर के जो महंत है वो पापा के स्टूडेंट है. तो उन्होंने बोला, मैम कचौड़ी खाई. उसके बाद मुझे 2-3 जो शॉपिंग के आइटम्स लेने थे मैम, जैसे ही शॉप पे गए, मतलब ऐसे लग रहा था भगवान ने सामने ही रखे हुए हैं. अरे ये ऐसे किया. एंड मैम 6:15-20 तक हम घर पे वापस थे. सो आई वाज टेलिंग माय पेरेंट्स आल्सो कि आज तो ऐसे प्लान था कि ये अब ये अब ये अब ये अब ये, तो मतलब सेकंड्स में मेरा काम होता चला गया. एंड आई वाज सो हैप्पी. एंड थैंक यू सो मच दीप्ति मैम. एक्चुअली माय लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट जब से मैं इस सेशंस में आई हूँ. Yeah, एंड congratulations. लाइफ That's इज also because आप सिंसियर, आपने खुद ही अपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया था कि आप इतनी सिंसियरली प्रैक्टिसेस कर रहे हो और चाहे कितने भी बिजी हो. यस मैम. एंड मैम वन टीचर टोल्ड मी, कुछ दिन पहले मुझे मेरे पास आई, मेरी ही फ्रेंड है, शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन दिस सेशंस. मुझे लगता है उसका भी ग्रैटिट्यूड नहीं हुआ. बहुत टीचर्स कर रहे हैं ज्वाइन, बट वो शायद नहीं कर पा रही क्योंकि शायद उसके ग्रैटिट्यूड में अभी थोड़ी कमी रह गई है. तो शी वाज सेइंग कि तू क्या कर रही है यार. मैंने कहा क्या हुआ. तो शी सेड कि वो इंदू पर बैठे बैठे थैंक यू लिख रही है. मैंने कहा आई वाज स्माइलिंग. मैंने कहा अच्छा. एंड इंदू वाज अ टीचर मैम जिसको सियाटिका पेन है. वो मेरे सामने आके ना बहुत बीमारियां बोलती रहती थी. आई सेड प्लीज मेरे सामने ना इंदू मैम नेगेटिव मत बोलो, और जितना आप उसको, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दर्द दर्द बोलते रहोगे, दर्द जाएगा नहीं. मुझे अजीब लग रहा है. तो वो बड़ा बुरा मान के मुझसे गई थी. तो मैंने उनको बोला था जब आपको दर्द हो रहा है ना, कोई भी भगवान का नाम लिखो, थैंक यू लिखो, जो भी आपका मन करे, और आप देखना वो चीज में फर्क पड़ जाएगा. एंड शी वाज द टीचर जो थैंक यू लिखने में लगी हुई अपनी लैब के कॉर्नर में बैठ के. एंड शी सेड कि प्रियंका ने बोला जब दर्द होता है ना, तो दर्द दर्द ना बोल के हमें थैंक यू लिख लेना चाहिए. एंड आई वाज सो हैप्पी कि ओ माय गॉड, मजा आ गया. Amazing. Yeah, this is what I was saying, that start impacting others' lives and you filled your own cup and now give it to the others. Yes, So I'm so enjoying it. Thank you so yeah, much, ma'am. Thank you. congratulations and wish you more successes and more victories and more money and more health and anything that you desire. Thank you so much for sharing. Then we have Dr. Nakul. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Ma'am, I have just two small sharings. Like you said that every night before sleeping, pray or say good positive thoughts and things. So yesterday night, before sleeping, I said 3-4 good things, and I said that tomorrow in the morning I got to get a call for an cesarean section. And ma'am, you don't believe, in 5:30 I got a call in the morning today, just now, for a cesarean section. I just came back some time back, so I just wanted said it's still there, and I wanted to share it. So that's one of the thing I have to share because I said it. मांग लेते हैं 5:30 AM को. थोड़ा Sorry, ma'am. लेट.
ऐसे थोड़ा लेट बोल देते यूनिवर्स को 5:30 की जगह थोड़ा टाइम Yeah, टाइम डिफाइन I कर didn't say any time. I just said that in the morning I get a call for cesarean section. I didn't specify any time. So, but I will listen to the whole through YouTube and it will be uploaded. But I thought this thing. Another thing was that I went for shopping before my kids. I have to buy some stuff for them. So before going for shopping, I went, like you said, give lot of positivity and thank universe for the Mexican shopping and money with me that I spend this money wisely and get good stuff. So I got very nice shoes for them, and then there was one jacket I was looking for my daughter from two times. I've gone to Marks and Spencer. It was a little expensive because kids' jacket are because they just wear it one season and then yeah next time grow they faster forget yeah about this. So I was thinking I take it, I not take it. So I went, and the third time that jacket was on 40% discount, and only her size was left. I immediately took it. I said, "Oh, probably universe still wants me to buy it." And the best part was that as I was roaming, I met my parents. They were also in the mall. So I told my mom, "Oh, I did this shopping, this shopping." Then she was asking, "Ye kitne ka mila, kitne ka mila?" I said, "Ye aise ka mila, itna discount mila." So, and when we were moving out, they had come in their car. She took out money and she gave me the cash. She's like, "What? This is for what?" She's like, "No, these gifts are from my side to my grandkids." So the money I spent, I got it back immediately that time only. how cool is that Miss Dr. Alchemist now So I was like seriously she's like हाँ हाँ हमने लेके देना है मैंने तो सोचा था इनको शॉपिंग कराऊंगी तो कुछ नहीं होता ये मेरी तरफ से तो this is the cash you just take the money she just gave me the money approximate it was that I think it was more than what I spent she just took and gave it to me she didn't count it but it was more I counted the next day and the third thing is that ma'am whenever I'm feeling low I start writing thank you thank you thank you sometimes 500 times sometimes 100 times sometimes 200 times it really helps me out it helps me to come out like you say कि गुस्सा आता yeah है लाइक द एग्जांपल आई ऑलवेज हैव इन माइंड कि वो बाल्टी में छेद आ गया है वो छेद को बंद करना है ऑलवेज रिमेंबर दिस सो या आई थिंक दीज आर द थ्री थिंग्स आई कीप ऑन डूइंग थैंक यू mm. सो मच मैम थैंक यू Thank it's you so you know much. initially And मैम that मैंने affirmation that Priyanka has just mentioned, happiness is my habit now. So Priyanka, you have to add now to it. Okay, happiness is my Yes, ma'am. habit. I write it. Yeah. so So before that I you when see. Yeah, I had please share. joined this group and used to listen everybody's victories and I used to find sometimes funny कि ये क्या छोटी छोटी चीजों में खुश हो रहे हैं और इसमें ऐसा क्या है you know I had these doubts initially I used to say कि like why they're getting so happy in these small things and it's maybe coincidence and you know ठीक है इतना भी कोई खुश होने वाली तो कोई बात नहीं है but now I feel it's actually now if I always you know initially I used to leave the meeting or in the YouTube also when till you used to say I used to stop it. I never used to listen to people's victories. Most of the time, I'm be very frank to you. But now I always listen to them very nicely, very and I feel so happy and I feel so good for them and I send them blessings. That you know, I feel really good. Now I like, you know, it's good to share. That's very important. Yeah. Sometimes लोग बहुत ये सोचते हैं अरे नजर लग जाएगी किसी को नहीं बताना. So I don't think so ऐसा कुछ. I think when you share, it grows more. I feel that Yeah. way. Yes. Yes, Thank thank you you so so much, much. ma'am. You actually become Dr. Alchemist now. And these, No, like these ma'am, I'm kind of just sharing, nothing is a coincidence. All that 40% discount in your daughter's size, you receiving the money back, and you getting a call for a C-section, like all that's happening, like for you creating them. thank you so, and it's all thanks to you and Poona ma'am and all the admins, Priya ma'am and everybody, all the admins who are working so hard for us, who write so many things for us so that we can keep on seeing it every day in the morning, evening, night. It is like with us. So I think that's commendable. Actually, that's most commendable. Thank you, Yeah, ma'am. very selfless act. Thank you Yes, so ma'am. much. Thank Thank you. you so Thank you, much. Dr. Thank you, Nakul, ma'am. and wish you Thank you. more power and more creatorship, like Thank be you in that so much. creator chair all the time. Immediately when you go that side, you imagine in your mind, you think that, oh, I have to sit on the creator chair, so change your chair immediately in your mind Yes, whenever you ma'am. dip low. Yeah, thank you Thank you so so much for much. So sharing. much, ma'am. Lovely Thank you, sharing. ma'am. Thank you Thank you, so ma'am. much. Thank you, ma'am. Yes. Hi, Shalini. Please share. Good morning, ma'am. Very good morning. Morning. First of all, thank you so much, ma'am, for wonderful sessions, that we hear every day. And I really am grateful to all the admins, Priya, Poonam, every one of them doing their work so well. It's like, ma'am, morning mein utho or tap on kar do or positivity ka shower itna badhiya sa le lo and you are good to go for the whole day. So thank you, really gratitude, ma'am, for all that. So I just wanted to share regarding today's chapter only because a few days ago, there was a lady, I've forgotten, she was asking about that sleep. She could not sleep, if I remember. She was asking you, ma'am.
So I would, मेरा भी एक ये problem था. During the corona times, I developed it that I used to go off to sleep like 10:30, 10 o'clock. But, मेरी नींद खुल जाती थी 2 बजे. And then, I'm just looking around. There is no scope for नींद. And वो थोड़े दिन तो ये चलता रहा. Then my husband used to get, और उसके बाद जब सो, फिर again 4 बजे उठ जाओ. Then again you are doing nothing. फिर नींद नहीं आ रही. And जब actually उठने का time होता था, I used to not be fresh at all to do my work. So sleep deprived mode में तो you're not happy also, and you have that stupid cravings also. So वो सब होने लगा. So but मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता था कोई tension है. So I used to tell my husband, मेरे को नींद नहीं आती रात को, ऐसे उठ जाती हो. So he said, तू ये गाना गाती रहती है. So ma'am, that particular time I remember I bought Kindle. So that नींद नहीं आती तो I'm going to read something good. उसमें power ये सब पढ़ती रहती थी. तो बट ठीक है, आई नेवर फेल्ट बैड. ठीक है, उस टाइम को पास कर लिया. बट मैम, आई हैव ओवरकम दैट पार्ट नाउ बाय अटेंडिंग योर सेशंस. अब क्या, एंड आई लर्न फ्रॉम यू टू दैट regenerated sleep. I'm totally regenerated. Thank you so much for that sleep. And I sleep like a baby. Ma'am, I'm literally sleeping like a baby. आई स्लीप एट नाइट, और मेरा 4 बजे का अलार्म जब बजता है तो मैं उससे 5 मिनट पहले ऑलरेडी अवेक होती हूँ. एंड इतनी फ्रेश, इतनी रिजनरेटेड, और उठ के बोलती हूँ मजा आ गया सोकर. दैट फ्रेशनेस इज देयर. सो वन थिंग इज दैट. एंड सेकंड, आई वांट टू टेल यू मैम दैट जब कभी आप बोल रहे होते हो ना, तो मुझे लगता है आई एम टोटली इन सिंक. यू जस्ट से दैट आई एम माई फेवरेट पर्सन मैम नाउ. मुझे अपने से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं लगता, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे बच्चे हो. सो आई लव माई सेल्फ. और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक आई राइट दिस अफर्मेशन, और घर में इट्स लाइक मेरा घर स्वर्ग है. आई लव दैट अफर्मेशन. सो इट्स ऑल हैप्पीनेस ऑल अराउंड. लेकिन उन सबके पास बैठकर भी मुझे लगता है कि वो फीलिंग आती है, वो टीनेजर वाली, टू गो एंड मीट अ बॉयफ्रेंड. नो, so I am my boyfriend. I want to just my me time. I'll come in, I'll say all those good things to me, and I feel on top of the world the whole day. This is So such a high energy, high power sharing you're making. उसी से पता लग रहा है that you're like. yes ma'am, so glad. I am not at all low the whole day, लेकिन किसी वजह से हो भी जाता है. I know, then I ask Shalini, कितनी देर बता. ठीक है, बुरा लग गया. Now tell me, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. पहले क्या होता था, days together. So अब तो अपने आप को मौका देना, in a few seconds only, and you are writing something and you are up. That's my responsibility to be happy always. So that has become a totally habit now. Happiness is my habit now. Thank you so much, ma'am, for everything. Thank you so much, admins, for everything. Yeah, Thank thank you, ma'am. She's correct. I did the same. I'm the same girl who'd asked ki neend nahi aa rahi. And trust me, since that Okay. day, it's not been a Wow. single day that I couldn't sleep well. Every day I'm sleeping well. And really, Wow. thanks, Deepti ma'am. Your sessions are just beautiful. The entire day goes so well. Thank you so much. And beauty also lies in the eyes of the beholder. Absolutely. We've heard Absolutely. that and we know that now. Thank you so much. Thank you, Thank you. Shalini. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you Thank so much. Yes, Vandana. Hi, good morning. And I will also start by gratitude and saying thank you to everybody. Very, very throat. Of course. Vandana, I don't know, you're not पहले audible क्या to होता me. था कि like Audible to everyone else? No, ma'am, it's distorted. It's Breaking, breaking. right? Yes, ma'am. Yeah. okay, I'll try again. Do you have a place in your house where the network is the best? Yeah, I'll just try. You can try and shift. In the meanwhile, we can take Soumya's. Yes, Soumya. Soumya from Goa today. Hi, ma'am. Hi, Hi. everyone. So currently, I and तुम ma'am वहां had पे a भी quick कैप chat. लगा के गोवा में. Ma'am, I have cold. I have cold. So me being here itself is a miracle, which I will do the sharing later. Today, I had promised ma'am that I will show the view. I've been showing the view. Ma'am was not concentrating, so just thought I'll raise my hand and show the view. Just we are on the borderline of Goa. It's called Sadashivgarh Fort. This is the Devbag. This is the place where this is the Kali River, and then the ocean meets over there. Okay. Over I'll have there. to pin you, huh? Okay, but let me okay, one second. I need to rotate my camera. Sorry, I'm showing. Yeah, Okay, now over you can. there is where the ocean meets, and this is the Kali River, like that.
So it's two place, the river and the ocean meeting point, and that's the beautiful sunrise. Sunrise. Wow. And that's the Ravindranath Tagore Road. Okay. So we came by that road, and this is our stay over here, and that is the bottom room is that, and we could see the sunrise from the room itself. So yeah, this I wanted to show, ma'am, This because is, it oh was my God, this is amazing. And it's the exact reflection in the sea waters. yes. So this is the Orange. manifestation for everyone. This is the manifestation of ma'am for me, actually. I Yeah. had not even had it in my cards to be here. And ma'am, when she met me, she put that idea in my head that go Goa. And we are slowly going up Goa. So we are traveling now. Goa is just 1.5 hour from here. So tomorrow I'll be in Goa. This is so beautiful. So you see the sunrise. Goa is known for sunset. So celebrate that sunset every day. And Yes, so ma'am. I just have to tell you, I've been to so many places around the globe, you know, like I'm an Yeah. avid traveler. And since 2013, my travels have become so escalated. But Goa is one place where, you know, I feel as if all the energies are aligned, you know, and you will feel that when you are in Goa from tomorrow. Yes. And the air of it, the moment like we land at the airport, the vibe changes, you know, it has something in the air. So that's Yes. that's why I call it my second home. Yes, I will do the similar Yeah. one tomorrow. Yeah. Sharing. Celebrate your Thank you so much. sunsets. Thank you. I'll just, yeah. Yeah. Thank you so much for sharing this beautiful sunrise with us, and enjoy and have the best trip ever. I Okay. will, ma'am. It is most Yeah. beautiful already, but I know it will get. And I've Yeah. done the triple five practice for this. Oh, And yeah. I'll share the whole thing once I'm done with the Yes. trip. Yes. Yeah. Once you come back to Pune, then you can share it with us. Sure. Yes, that All absolutely. right. Enjoy Thank to the you. hilt. Bye-bye. Bye. Yes, Vandana, now you can share. Hello, can you hear me now? Absolutely. Okay, so I'll start again with thank you and gratitude to everybody. It's been like literally enjoying this session. It's been few days, probably a week only. I'm listening to it, and I started going on the YouTube recording and listening the past thing. And from past 1 week, I'm just listening the recording while going to the office. No music, nothing else. This is my like prayers going and coming back also, and this give me immense power and positivity. So it's been 2 days. I had a bad throat, cold and cough, and I'm just like, this I have developed this nature that if my throat is paining, I'm just doing like thank you for healing, thank you for healing, thank you for healing. And when I took my medicine and I said, you like, while taking that tablet, I said, you're miraculous, you're miraculous. And it's really making a difference. Like in cold, I think normally we take antibiotics or suffer for 5 days. This is my probably second or third morning basically, but I'm like feeling, I would say 90% cured, that I'm not feeling pity or lethargic or something. Today I have off and I have so many things to do, and I'm deciding after this class or this session I will start doing this work. And when I was small, I used to go with my grandmother for that puja and katha. She used to take me everywhere, and I remember her every single day for all the good teachings I had. So when I have your session, पता नहीं कैसे जैसे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं. It's like, listening something universe is giving. So thank you so much, everyone. Yeah. Cheers to your best Thank of you. health. So this is cinnamon and ginger water. Have this with Yeah. hot water and put in a lot of blessings into it. That thank you for my perfect health. I love my body. My body heals so fast. It's like a miracle. Thank you for giving me an amazing health. Thank you for showering blessings on me all the time. I'm so loved by the universe. Thank you, God, for doing that to me. And then drink it. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much for so many amazing sharings. And then see you all tomorrow. Have a great weekend. And I ma'am, think one there's more thing. festivity and Christmas all around.
So, beautiful red color we see all around these days. We go to the mall, on the road, it is all well lit up, and, like there's celebrations everywhere till the New Year's. It feels so good, So this is the reason why Christmas comes just before the New Year's, and it's actually always been my favorite festival. I think bahut janmo se hoga mera because I don't know, like, so more than Diwali, I love Christmas, it's like that. So let's just get Nakul into wanted that to speak celebratory mode of something. Anji. Nakul wanted to say something. Yes, Nakul. Just ma'am, whenever meet Poonam ma'am, she always asks me my desires and thing in the glass, and she prays for it, and we drink it. So I started doing this every day. When in the morning I'm having a water or my tea, I do that every way. So I think one thing Poonam ma'am taught me 2-3 times she did it for me. So I think that is also very selfless to do it for somebody else. Very selfless, which I don't think so anybody in this world do it for anyone else. I think that is also a very good You thing, do ma'am. it for so many people. Wouldn't you do it? Yes, I would, but I'm just saying, initially I used to find it very low, but since I got into this family, into these teachings and learnings, selfless love, caring for others, so I think that is one thing I have learned a lot about this also. I wanted to share that also. Yeah, thank you so much for sharing. And please give this. This is called the magic ingredient chapter that we've done, chapter number 8, which means to every water, to every food that goes in our body, it has to be saturated with gratitude or whatever it is that you want to tell that food. That thank you, food, that I receive money from all over the world. Thank you because they Good morning, part ma'am. of it. That's Just why. one thing I want to share just one thing Ji. about the positivity of the sessions, ma'am. I always go to gym after the sessions. और मुझे एक तरह से किसी प्री वर्कआउट की और किसी एक तरह से वार्म अप की भी जरूरत नहीं पड़ती. इतना फुल ऑफ एनर्जी होता हूँ. पॉजिटिविटी इतनी एनर्जी इतनी भर जाती है. और मैं जाते ही चाहे मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूं या कुछ है तो मैं देखता हूँ यार लोग इतने लेजी हैं. जिम में जाते हैं, आराम से बैठते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं, ये वो. और सेशंस के बाद जब मैं जिम जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि फुल ऑफ एनर्जी, कोई मुझे जरूरत नहीं होती, बिल्कुल फुल वार्म्ड अप होता हूँ. तो तो मैं इट एक और शोज चीज काइंड ऑफ करती हूँ. पॉजिटिव एनर्जी वी हैव इन द सेशन. हाँ, this perks you Really up. makes an impact, yeah. Thank you so much. So I also Thank you, bless ma'am. Thank you so every much, ma'am. gadget and every machine of the gym. So what I do is before I enter the gym, I saturate it with magic dust of gratitude. Okay, every machine, even if I'm not using it, because I don't do cardio in the gym. Cardio I do outside and I do strength training in the Yeah. gym. But every Okay. cardio machine, whether it's a treadmill or a cycle, मैं पूरा एक golden dust से पूरे gym को भर देती हूँ अंदर बहुत अच्छे से. जो 3 ट्रेनर्स सुबह वहां पे होते हैं जो मुझे वर्कआउट कराते हैं. So उन तीनों trainers के लिए I bless that their life should be full of the best of health because they are giving such an amazing health to all of us, and that they be abundant and they prosper, by day and night. And every person who's coming to this gym will experience the best of their health, and so this is what I in my mentally as I walk towards the gym, I've already done all this, and then I go और मैंने तो अपना have a magical day already कर लिया होता है, that the gym is leaving me energized and super healthy, and it's really giving a good boost and start to the day. So that Yes, way. ma'am. That is something I've learned from you, and I do the same. I thank each and everything in the gym and the coaches, and when I walk on the treadmill, I do this practice of thanking each and everybody, and I'm looking in the mirror and thanking myself also. I know we get to do so much of a mirror work in the gym because Yeah. इधर mirror है, उधर mirror है, पीछे mirror है, Yeah, आगे mirror mirrors है. everywhere in the gym. The mirror everywhere. So you can't help but, and we know the value of the mirror. It's a miracle mirror. Yes, So ma'am. it brings miracles to our lives. Yeah. So thank you so much. Lovely session. I also thoroughly enjoyed it, and to all of you. And thank you, Priya. I literally stand on your shoulders and I'm able to do this work, which is bringing a difference. And This thank is you the so joy much. that we get, ma'am. This is the thing, actually. We all do this for this only. Now, the amount of happiness is given to people. It's वही like, मुझे लगता है कि मैं पूरे दिन भर में push and pull अपने आप को, मेरे affirmations to stay in discipline, to be able to sleep early, to be able to say no for parties and all that, or I go but I come back early. So वो पूरा जो वो सब होता है ना, that's only to hear these experiences, that This feels session like. leaves us with full of energy and happiness, Deepti. Thank you.
Thank you stays so with much. us. And Ma'am, thank it you, doesn't leave Soumya. us In actually. spite of being on a vacation, she's giving us emphasize one-liners and this and that and summarizing the sessions. So, Soumya, thanks to you. This is who I am. I also love my mornings, even if I'm on a vacation. When I was a very small baby, you know, like everybody in the house was sleeping, and I'd actually wake up at 5:30, even back then. Even when I was a baby, I've so much loved my mornings. And, you know, I see so much of me in you, Soumya. I mean, like the way you are, the way, you know, like you meditate at this age. So I've always been like this, sitting in my balcony of my house. And when I was a baby, you know, in school, and I was looking at birds and listening to the chirping of birds, then I would discuss कि आज मैंने एक blue color की वो bird देखी, that was so cute. And, you know, like getting up, sitting in my balcony and reading a book. So that time it used to be Enid Blyton's and Hardy Boys and all that. But yeah, I mean, like that's always been, and I see a lot of my reflection, you know, like you look so much like me. Oh So my this is God, how thank I you look. so much, ma'am. Thank you Yeah. so much. Yeah, because nobody wakes up that early on holidays to see the sunrise and all of that. Yeah, so this is like actually beautiful. Thank you so much, Soumya, for doing that even on the vacations. You are penning down and summarizing, and Priya, and thank you so much, and Poonam and Meena for you know, like leading the evening sessions. Everyone working behind the scene, Shiba, Neetu, you know, like अनुराधा, सब जो एडमिन में, क्योंकि हमने उनको टास्क दे रखा है कोई of making a separate diary for affirmations, and everyone who's an admin are doing that, because of which we see the quality of these sessions changing. So we had a Zoom meet, and there's an added task which is given to them, which is amongst, you know, like more than what everyone, all of us do. So yeah, firstly, thank you for keeping up with that. And, you know, see you tomorrow. Have a great celebratory weekend, because life is a celebration and every moment has to be enjoyed. Right? So thank you so Thank much. you, ma'am. Have a great day. Thank you, Dipti Thank you ma'am. so much, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you.